significant figure in any measurements the accurately known digit and first doubtful digit called significant figures. That's called the accurately known digit and the first doubtful digit are called significant figures. अब इसके जनरल रूल्स जो हैं in any measurements all the digits 1 2 3 4 up to 9 are significant. All these digits, these are significant always. तो फिर बात तो रह गई ज़ीरो की. For zeros, number 1 0 in between the significant figures, 0 in between the significant figures are significant. Example है 2005. इसमें 2 और 5 तो हमने पहले ही लिख दिया है कि ऑल द डिजिट्स 1 to 9 ये तो सिग्निफिकेंट्स होते हैं. अब ये दोनों ज़ीरो जो हैं इन बिटवीन है. सो दीज 2 zeros आर significant also. In this number both zeros are significant also. इसके बाद अब 0 on the left, number 2 zeros on the left of a significant number are insignificant always. और तीसरी बात वो कर चुका है हमारा. हाँ अच्छा, इसमें पहले एग्जाम्पल भी कर दें. एग्जाम्पल 0.0059. Then these in this number all zeros are insignificant. ये तीनों ज़ीरो जो हैं ये क्या हैं? ये इनसिग्निफिकेंट हैं. और आखिर में तीसरा पॉइंट 0 on the right of the significant figures are may or may not be significant. May or may not be significant. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. ये जो ज़ीरोज़ है एग्जाम्पल्स में लेट
5,000 रुपीस। अगर हमारे पास एक ही नोट है, कौन से वाला? 5,000 का। अगर हमारे पास एक नोट है 5,000 वाला, तो देयर इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज ओनली 5। अगर हमारे पास हजार के नोट हैं, तो कितने नोट होंगे? 5। हजार के नोट हैं, टोटल 5,000 हैं, डिवाइड कर दिया, वी गेट द नंबर 1। सो अगेन देयर इज, since we get one number as a result, it means we have only one significant figures, only one significant figure। अच्छा भाई, अगर हमारे पास नोट हैं फॉर नोट्स 500 के, 500 वाले नोट हैं आपके पास, तो 5,000 को डिवाइड कर दें, यू गेट 10 नोट होंगे, लिखेंगे 1 और 0। So there are 2 digit here, we get 2 digit, we get number 10 having 2 digit 1 and 0, and both are significant, that is there are 2 significant figures. For notes of amount 100, 5,000 by 100, we get 50. Again there are 2 significant figure for the note of amount 10 rupees, 5,000 by 10, we get 500. There are 3 significant figure, and for the coin, if we have coin 1 rupee each, then there will be 5,000 coins, therefore 5 as well as all zeros are significant। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में।